linear programming. So now I think as usual I can take a short screenshot, then straight away go to sharing mode and I will give it. Anurag Singh is also joined. Dhania is already joined. Okay. Still students are joining, no problem. So meanwhile, please on your camera, we take the snapshot. This is the last screenshot of my class. So Suman, okay, Anurag, okay, Kumud. So almost the phase wise now I recognizing one by one. Got it. Sandeep is also here, okay. Neil is also here. That is also here, okay. Oli is okay. Okay, so I think only 2 or 3 camera is on only. But the camera is not on. Others, Suman is where the Suman. कमेंटरी ओके जो है तो कैमरा थोड़ा 1 मिनट के लिए ऑन करो जो ऑलरेडी है ओके एरिया मैंने साउंड इज क्लियर ना Yes, sir. Yes, sir, clear है. ओके ठीक है तो स्टेट then lot of discussions there in the last class. So before I try to finish it up linear programming, then we can discuss one by one. Okay. So let straight go to the sharing mode. That is better so that we can discuss. So okay, I think as usual I have to say something about linear programming. Then we can see the solutions because concept has to be clear first. Because what is the linear programming, how it has come, what will be the profit basically. So based on this, you have to do it. So this is this is one of the example only. Okay.
So linear programming, basically it is a equation where the sum of the linear equation is there and how to derive the values. That is the programming. Now here you can represent is a graph also, and through this algebraic program. Through this algebra already your normal calculation also. So both way you can derive the things. Different conditions are there because it is a real practical problems where you will face it. The linear program basically all are practical things. For example, there are two manufacturers. They are manufacturing some of the things, and there is some profit, there's some loss. So all these things are, first of all, you have to make a equations, and then from the equation you have to derive it. So there are a lot of axes are there, data. Um, and most of the things that is, I would say, there is a feasible region, a particular area. From the solution, you have to say where the space, and based on this coordinator, you have to identify the area where the constants are there. Then you have to do it. Better, I can give you some other way example. Suppose take it some of the as an example. There are one line, two line. All these line are basically the equation, linear equations. Okay, when you are plot the situation, suppose this is for your uh, profit line, it is cost line, it is a manufacturing line. Just I'm giving an example only. So particular you are the manager of the particular company. You are just running this company, and you should know मेरा कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, where the problem is going on in my company. Profit area देखना है, cost देखना है, and your manufacturing system देखना है. So suppose there are three equations: your cost, manufacturing, production, you can see it, and your profit. So let it be a three lines up there. When you are get the data, profit, manufacturing data, because it is your hand, you can already throughout the year how many raw material you have purchased, you know, and how many production you have also know. So based on this known value, you are making some equations. Okay, try to understand it. Now you have to identify the constants and uncertainty area. Why you are calculating linear programming? So that in near future, the course of action you have to take it from managerial world, because you don't know. You can next year my production will be good or not, for any situations. So that time, so when you are plotting the all the equations, the area, definitely you have to get some area by the intersection area, then you can localize the problems. इसको हम थोड़ी सी सरल भाषा में बताएं. कई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है हुआ क्या, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ. ये सब चीज सारी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लो तो स्लोली आप पता चलेगा ये प्रॉब्लम है, कल्प्रिट यही है, इसी वजह से मुझे नहीं हो पा रहा है. तो वो चीज आपको ढूंढना है. यू हैव टू सर्च द कॉन्स्टेंस एरिया, कहाँ है. तो वो एरिया आपको, बिल्कुल समस्या तो सब जगह में है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम इसमें छोटा है, कुछ प्रॉब्लम इसमें बड़ा है. तो अल्टीमेटली आपको देखना कहाँ पर मेरे को फोकस देना है. यू हैव टू focus on particular area where you have to take action. Basically, you have to take action. So linear programming में आपको आइडिया हो जाएगा जी क्या करना है. So numerical, when you saw the numerical, then it will be more easy. So okay, let's see. So इतना तो आपको ध्यान में रखना है जब हमेशा you are searching the particular region feasible है कि नहीं. Feasible means सटीक है कि नहीं.
हम करेंगे कि नहीं, जैसे सर्वे होता है, ड्यूरिंग द सर्वे आपको प्राइमरी फर्स्ट सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं। देन मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे जी यस मुझे फिजिबल रिपोर्ट आ गया है और इस प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ सकते हैं, बा प्रोजेक्ट तो ही स्टॉप कर देना है। फिजिबल रिपोर्ट और फिजिबल रीजन इज सच ए थिंग जो बेस्ड ऑन दिस यू कैन गो अहेड। आपको एक बात मिल गया, एक रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिला है जो बेस्ड ऑन यू कैन रिपोर्ट मीन्स कॉन्स्टेंट्स प्रॉब्लम्स सारी चीज को आपको सारे एज ए बेस्ड ऑन डेटा आपको मिल गया, बिकॉज यू आर इन कंप्यूटर साइंस। सो आपको हमेशा डेटा याद रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द एनालिसिस आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू टेक सम सॉल्यूशंस। सो लेट्स सी। देखिए इसमें छोटी छोटी चीज है लिखा हुआ, आपको पूरे चीज जब डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे और आइडिया हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, इक्वल प्रॉफिट लाइन्स, direction of increasing profit means this is lines where you can see इस सब एरिया जो है आपको इक्वल प्रॉफिट लाइन्स आ रहा है, मैंने प्रॉफिट आर ऑलमोस्ट इक्वल, सो नियर टू ऑल this is the position, this is the area, this line a particular increasing profit, so direction of increasing profit, so which are the line are increasing or which are the line is decreasing, so based on this you have to take a things. Now this is the things, this is the area, the shaded area जहाँ पर colored किया गया means this area are very much important. ये area important नहीं है, इधर non feasible area, this is feasible area, मैं हमको इसी area में work out करना है. We have to very much concern about this, not this area. Okay. और अदरवाइज मैं दूसरे एंगल से मैंने आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज सम एक्सीडेंट इज ऑकर, कहीं भी जाकर मोटरसाइकिल दुर्घटना हुआ, कुछ हुआ सड़क पर कई जगह, फर्स्ट आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको रिपोर्ट कराए। वो थानेदार क्या करेगा, पहले देखा वो अपना एरिया का प्रॉब्लम है कि करेगा, तभी वो एफ आई करेगा, नहीं तो करके अब दूसरी जगह में जाए। सो बेसिकली व्हाट हैपन, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई एरिया जुरिडिक्शंस वेयर देन पुलिस आएगा, आदमी आएगा, डॉक्टर आएगा, केस होगा, ट्रीटमेंट चलेगा, हॉस्पिटल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी भी आएगा, देन आफ्टर दैट वन बाय वन एवरीथिंग विल बी सॉल्व। सब फर्स्ट जब होता है तो इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, देन नहीं तो क्या होगा, इधर का भी थाने का पुलिस दौड़ के आ गया, इधर का पुलिस दौड़ के आ गया, हो गया दिल्ली से आया, साउथ दिल्ली से आ गया, सब हचपच हो जाएगा, सब पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, nobody will take any action, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना एरिया कहाँ का है, प्रॉब्लम कहाँ है, वो पिन पॉइंट करना, दैट इज पिन पॉइंटिंग द प्रॉब्लम्स, देन यू कैन गो अहेड। एनीहाउ मैं कहीं सारे उदाहरण आपको इन्हें देना चाह रहा हूँ सो दैट इस यूनिट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग, कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह में आपको इसका काम में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, define the terms objective function, constants, feasible regions, then you have to remind it constants क्या है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो आपको पता होना चाहिए। feasible region, feasible means एरिया कहाँ, वो जो शेडेड एरिया, जिस एरिया में आपको काम करना है वो एरिया आपको डिफाइन करना है, बाहर नहीं होना चाहिए, उस एरिया के अंदर में आपको जुरिडिक्शन है। feasible solution, that solution भी feasible होना चाहिए। optimum utilization solutions, the linear program। so आपका ऑब्जेक्टिव से लीनियर प्रोग्राम का एक तो है आपको फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, फिजिबलिजेंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मैं बोल देता हूँ, बेसिकली योर मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, देयर आर टू वर्ड्स आपको याद रखना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आपको मैक्सिमाइज, कभी कभी क्या होता है मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो मिनिमाइज करना। फॉर एग्जाम्पल योर प्रॉफिट मार्जिन्स, so it is linking with the productions। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है और सप्लाई आपका अच्छा खासा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट प्रॉफिट भी आपका चांसेस है बढ़ने का। दैट मीन्स
ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आपको प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, देन आपको प्रॉफिट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट आपको बढ़ जाएगा, और कॉस्ट और मटेरियल, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग वो भी उस हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मतलब मीन्स आपको कई जगह में देखा जाता है जो आपको कोई जगह में मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना पड़ेगा उस चीज़ को, नहीं तो घटाने पड़ेंगे। तो घटाने का जो है वो हम लोग मिनिमाइज बोलते हैं, और जब बढ़ाना है किसी चीज़ में वो चीज़ हमको मैक्सिमाइज बोलते हैं, तभी आप उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कर पाते हैं लीनियर प्रोग्राम। नाउ सेकेंड, draw feasible regions and use it to obtain optimal solutions. So draw physically आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, दैट आई शो यू। आज हो सकता है मैं एक छोटा सा आपको वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी दिखाएंगे जो मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, दैट आई शो यू हाउ टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन और कैसे आइडेंटिफाई करना है। टेल व्हेन आर द मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इफ इट इज मोर देन वन सॉल्यूशन, गुड, सो आपको वो देखना है। When the problem has optimal, so there are so many things are there. It's the objective of this. Anyway, first of all, as you know, that's basically some of the functions are there, equations, generally you can identify. Constants, there is a restriction to the satisfy of the variables. These all are constants. Non-negative restrictions is also there. These are, and they are important here. They have to note LPP. Linear programming problem. Suppose in the question paper it is given, some equation has given linear programming, and आपको LPP करो, explain the LPP, do the LPP, तो आपको ये LPP कहाँ से आ गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके। सो LPP आपको जानना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन में इस तरह का लिखा रहता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको जानना चाहिए। Again, मेरा जो इंटेंशन है, I have to show you the study material and my material, whatever it is, which are the area you have to very careful, दिमाग में रखना है। Now, feasible region, the common region determined by the constants of the LPP is called the feasible region. Means जो कॉमन एरिया है, कॉमन रीजन्स, जैसे आपको जो शेडेड पोर्शन है, वहाँ देयर आर थ्री लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड मेक ए वन एरिया, दैट इज अ कॉमन एरिया। तीनों लाइन के लिए वो बराबर है। सपोज देयर आर एक्स एंड वाई एक्सिस है, तीनों लाइन चला गया है और एक कॉमन एरिया बन चुके हैं जिसमें तीनों लाइन पास कर रहे हैं। So all the three lines are passing through and making some common area, that is your actually your feasible regions. So when the common area or formation are there, then you can state it will be restricted. This is the area or your feasible regions. And moreover, most of the constants are lying there. And I mean, सारे constants उसमें ही छुपा हुआ है. So LPP, it is called the LPP, called the feasible regions of LPP. Okay, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। Then solutions, every point that lies on the feasible region is called the feasible solutions. Means when you see the intersection points, there are so many points are there, cutting intersection दो और तीन पॉइंट है जहाँ जहाँ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट है, और उसी रीजन के अंदर में सपोज पर्टिकुलर एरिया है, आई थिंक सपोज फॉर एग्जाम्पल जो भी इसमें किया हुआ है, सपोज इस फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फिजिबल रीजन जो शेडेड है, कलर्ड किया हुआ। सो दिस पॉइंट और ये दो तीनों पॉइंट, और जहाँ जहाँ लाइन को कट किया है ये लाइन दिखा गया। सो ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट, स्पेशली दिस पॉइंट आर इम्पोर्टेंट। तो बेस्ड ऑन दिस या फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है जहाँ से आपको टर्निंग स्टार्ट हुआ, दिस लाइन इज कमिंग एंड then again it is sloping start, so this point is important. Again, when this particular line, it is cutting intersection here, so this point is also important.
So the nearer point is very important. When it's the same type of car, don't take here, this point is not required. Here this person is not required because you have taken already. So area define करने के लिए constant feasible area region जो है, this region को define करने के लिए you have to take some point. These points are for helping the solution of the feasible region. वही कहना चाहिए. जो feasible regions का solution करने के लिए point का मामला. This is so feasible solutions. Every point that lays on the feasible regions is called a feasible region. उसे जो शेडेड लाइन जहाँ जहाँ टच करके रखा गया है और वो जितना सारे पॉइंट निकाल के आ रहा है वो सारी चीज जो है आपको feasible solution में आ रहा है. So note that each point in the feasible regions satisfy all the constants of the LPP. Means LPP का अंदर में जितना सारे constants है वो आपको satisfy करेगा. Optimal solution, feasible solutions that maximize, मैंने कहा ना आपको just थोड़ी देर पहले, आपको maximization and minimization, maximizes and minimizes the objective function is called the optimal solution of LPP. So ये भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. शॉर्ट नोट के हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन में. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन्स, ये सारी चीज आपको देखना है. सॉल्यूशन again I will discuss with you regarding the during the solution also. Anyway, I'm not going on all this theoretical part only. Let's go to things. Some procedure you have to know, some techniques for solving the linear programming problem. So what are the techniques? अगर आप linear programming का जब solve करने जा रहे हैं, कुछ techniques है. वो क्या क्या टेक्निक है आपको करना है. जैसे फर्स्ट आपको बेसिकली ग्राफिकल मेथड की. देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग एन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड. एक तो हो गया आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड. आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड. नंबर 2 आईएसओ प्रॉफिट और आईएसओ कॉस्ट मेथड. तो एक कॉस्ट और प्रॉफिट मेथड भी आपको. मोस्टली हमारा कॉर्नर मेथड ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं. दिस मेथड आर वेरी रेयर. सो लेट्स सी इफ एनीथिंग आर रिक्वायर्ड. सो कॉर्नर मेथड अगेन there are some steps are there. The corner method with some steps are there. Which are the steps? First step, plot the feasible regions. First things you have to plot the feasible region. Then find the coordinates of the corner. सारे कॉर्नर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है feasible regions से. Okay. Then calculate the value of the objective functions. Then after that आपको सारे कॉस्ट निकालना है. कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, सारे कॉस्ट कैलकुलेट करना है. देन बेस्ड ऑन दिस थिंग्स आपको मैक्सिमम इज मिनिमम डिक्लेयर करना है वैल्यू. सो अल्टीमेटली देयर आर 4 स्टेप्स. क्या क्या करना है? फर्स्ट प्लॉट द फिजिबल रीजन. प्लॉटिंग हो गया. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट. कोऑर्डिनेट निकालना है सारे पॉइंट को. दैट आई शो यू द सॉल्यूशन आल्सो, देन इट विल बी मोर क्लियर. अब स्टेप से भी याद रखिए. Now step number 3, calculate the value of the objective functions of each of the corner points of the feasible regions. Value निकालना, value, calculate the value, ये आपको ध्यान रखना है. Then pick up the ultimately सारे पॉइंट पर लेना नहीं है because there are mainly suppose 3 or 4 points are there. और सारे पॉइंट का 3-4 पॉइंट का वैल्यू भी निकालिए. मतलब पॉइंट भी निकालना है, उसका वैल्यू भी निकालना है. Then you have to choose one value, one corner, one value आपको लेना है. वो based on this the maximization or minimization के लिए आपको चाहिए value. Only one you have to select it of the objective functions from among the points. So third point में देखिए लिख दिया, clearly लिखा हुआ. थर्ड स्टेप में जितने सारे पॉइंट का निकाल आएगा और उसका कॉस्ट निकल के आएगा, बेस्ड ऑन दिस आपको ओनली हैव टू टेक वन पॉइंट जो वैल्यू आपको जो मैक्सिमाइज कहलाएगा और नहीं तो मिनिमाइज कराएगा.
So these 4 steps आपको याद रखना है during the solutions. Now let's see the solution. Now start straight away आपको solution में आ गई. Find the maximum value. Now you see, अगर मैं if start में एग्जाम्पल में आ जाता तो आपको कंफ्यूजन है. अभी देखिए एवरीथिंग विल बी आपको आंखों का सामने है और सब याद किया जाएगा. Find the maximum value of 5x plus 2y. That means this is one of the equation, linear equation. What are the equations there? जिसको मैक्सिमाइज वैल्यू इसमें से निकालना है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स भी आपको देंगे. बिकॉज कांस्टेंट्स अगर नहीं देंगे तो आप प्लॉट कैसे करेंगे? यू हैव टू नो द कांस्टेंट्स, देन ओनली यू कैन प्लॉट इट. नाउ दिस इज द इक्वेशन इज गिवन जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, and this is the your constants. Constants are in terms of equation. Constants is also given as in terms of equations. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Solution. देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन किया गया है. Let us denote 5x plus 2y by p. That is basically these things are consider कर लीजिए, no problem. You can take it p. Okay. Now note that इसमें से this one 2x minus 3y less than or equal to minus 6. This इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे. कैन बी रिटन एज ए लाइक नेगेटिव से माइनस से आप डिवाइड कर दो. सो दैट मीन्स नाउ इट इज हम लोग इसको पॉजिटिव कर दें. बिकॉज ऑफ दैट दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंज. नाउ हम चेंज इट बिकॉज नेगेटिव फिजिबिलिटी हम लोग नहीं लेंगे. दैट इज वन ऑफ द कंडीशन. सो इस टाइप का इक्वेशन होगा. फर्स्ट आपको उसको चेंज करके पॉजिटिव ले लेंगे. सो ऑल दिस आर नाउ पॉजिटिव. Then only you can identify the points, area आप डिनोट कर सकते हैं. क्योंकि सपोज देयर आर वन लाइन x एंड y आप प्लॉट किए जा रहे हैं ग्राफ में सारे पॉइंट को, तो कुछ पॉइंट इधर आ गए नेगेटिव साइड में, माइनस में, तो आपको एरिया फिजिबल एरिया जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. आपको एरिया बड़ा लंबा एरिया हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई यू मेक इट ए पॉजिटिव. आपको उधर इस कोऑर्डिनेट में लेकर आएगा. पॉजिटिव मीन्स it will be in the same coordinate and same plane में आ जाए. Then LPP आपको identify करने में आसानी हो जाएगा. So we can write the given LPP in the following format. कैसा है? So maximize P is equal to P. This is actually हम लोग P consider किया. So that means 5x plus 2y is equal to P because हमने इसको P मान लिया. Let P मान. And subject to these things. Now here actually you have, as per the you have changes some of the things for calculating this, and we plot the feasible regions bounded by the constants. In figure 5 में आपको देखा है सब कुछ. Line 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, जितने सारे लाइन्स है इसमें उसका इंटरसेक्ट पॉइंट को ले लिया गया ए बी सी डी करके. सो सॉल्यूशन देखने से और अच्छा हो जाएगा. नाउ कंडीशन इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. लेट सी द फिगर फर्स्ट. सो टोटल 1 2 3 4 टोटल चार लाइन्स हैं. 1 2 3 4. So out of the lines we are intersecting point will लेना है. That is 1 2 3 4. So you see there are 1 2 3 4 lines are there and 4 point A B C D 4 point आपको मिले. So there are 4 lines. Basically line 1 and line 2 intersecting. So एक पॉइंट आपको मिला. लेट्स सी लाइन 1 एंड लाइन 2. ओके देखिए कहाँ है. इसमें नंबरिंग कर दिया होगा. यस, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2. तो लाइन 1 एंड लाइन 2 यहीं पर
intersect point 1. So that's A. So we are taking one of the point, intersecting point line 1 and line 2, जो ऑलरेडी आपको यहीं पर लिखा हुआ है. Line 1 and line 2 intersect point A, and that is the value of the coordinate of the value. Coordinate 18/7 and 2/7. First up, just see the point. Then after that, I will tell you how it has come or not. Okay, based on this equation. Now, second line, किसके साथ है? The lines 2 and line 3 intersect at point P. So line 2 and 3 देखा जाए. This is line 2. इधर लिखा हुआ line 2, and then this is line 3. Now it has intersected point is where this is the point. That is A point. इधर actually लिखने की जगह इधर this is B point. This is 10. 7/2, 3/2. So another point is आपको मिल गया. Now C point. Definitely it is a line number 3 and line number 4. So line 3 and line 4 intersected in C points. Another point we have. So like this, another point, D point मिल गया. So A, B, C, D. This is the area. This is called the feasible regions. The feasible region हो गया. इसको डिफाइन कलर कर देना, शेडेड कर दीजिए. अदरवाइज हैच लाइन कर दीजिए. सब डिफाइन हैच लाइन कर दीजिए. So आपको एरिया डिफाइन means this is the area where the mostly all constants are there. Okay, so हमारा step, there are 4 steps. तो 3 step हो गया. प्लॉट कर लिए, लाइन हो गई, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया. देन हमारा पॉइंट, चारों पॉइंट निकल गया. ए रीजन्स टैग हो गया. अब इसके बाद इसका वैल्यू और ऑप्टिमाइजेशन करना है. देन क्या किया इसमें? या सो PA. Now this is your equation. You see, P is equal to 5x plus 2y. जितना कोऑर्डिनेट वैल्यू है x and y, दिस वैल्यू आपको इसी इक्वेशन में पुट अप करना है. So you have to fill it out all this x and y value in this equations. Actually पेज ऊपर नीचे हो रहा है. आपको बार बार मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है. Otherwise, so point A, this is x value, this is y value. So 18/7 with equation में आपको टक किया. 18/7, this is x value, and 2/7 is आपका y value. So 5x plus y जो था आपको वैल्यू 5x, हमें फॉर्मूला क्या था? 5x plus 2y. So yeah, so 2y, that is 1/7. So 2 into 1/7, so 2/7 हो गया. So this is the way they have filled it up, all the values. So all the point का coordinate मिल चुका है. Now maximum value of P. Now from here you see the value wise maximum value कहाँ है? And you say the ratio कम हो जाएगा. This is also less. This is also less. This is the maximum value 19. So PB, this point, P point, its corresponding value is 19. Is the maximum value is 19, and it occurs at x. You see, x value and y value में आपको मिला. This x and y value. तो आपको लिखना है that maximum value of P. P means particular dust equations is 19. पहले लिखा है. वैल्यू आया, वैल्यू निकाल गए. तो 4 स्टेप्स हम लोगों निकाल गए. एंड आपको किस वजह से हुआ? That is x and y. This value के वजह से हमको value change हुआ. This means ultimately, as a suppose you are a company manager, कंप्यूटर कंपनी है आपके पास, you are a कंप्यूटर कंपनी.
So X is a raw material and this is your software technology, some program, some software. So now this X and Y value, we don't know how much software program is required to collect from the internationally, I have to purchase it. Or raw material, what type of material is required. So when you get this X value and Y value, these two things you can purchase and you can put in your new formula, linear equation formula, and you will be profitable. Your company will be right. So मैं practically बता रहा हूँ जो basically this type of problem or things give a solution. So as a manager, you have to do it as a programmer or as an analyst. So you have to give a direction to the company. So this is the area. This is the key things to be changed. Then we can have a maximize the things. So that type of decision you have to give it. Okay, I think can see the another example. So I think basic idea is first what are the equations? This is another equation is given. Find the maximum value of 2x plus y. Earlier it was 5x plus 2y. Now it is 2x. Again you can consider as a p constants as given. I hope you see any negative constants, then you can convert it in positive. So the direction should be in the same. Should not plot that कोई point दूसरे जगह में ना चले जाए. Means कहने का मतलब all the lines should be in same area. Otherwise एक line इधर चला गया, इधर हो गया, तो आपको ये रीजन feasible रीजन बनेगा नहीं. वो बाहर चला गया ना, वो लाइन को इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, वो स्टैंड अलोन रह जाएगा. दैट्स व्हाई आपको पॉजिटिव बनाते. एनीवे सेम प्रोसीड्यूर. आपको फर्स्ट जो भी है इसमें वैल्यूज उसको पुटअप करना है और आपको प्लॉट करना है. I don't know, it is a lengthy process, but anyhow you have to do it to practice it. Then only you can do it. It's all a lengthy process. And you see now another thing is nowadays questions are coming in this way. Not stated. Now as far as first example and two example we have seen, this is given. This is also not problem. Here actually what happened, it is the exam solution. You don't have any problem because it is given. Because maximum value is given, equation is also given. So don't worry because simply you have to take it and put it in your formula. Regions बना लीजिए हो जाएगा. But suppose as I told you yesterday of linear programming, it is the last unit of first semester, but it is the first unit of your second semester. Because अभी देखिए कितना धीरे धीरे थोड़ा slowly harder होते रहे. Because that programming आपको धीरे धीरे और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना. ये आपका बेस है. लीनियर प्रोग्रामिंग आपको आगे चल के आपको एक बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस बना सकता है. तो इसमें आप ध्यान से सुन लीजिए. अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा क्योंकि ये आपको आधार है, बेस है आपको आगे सेमेस्टर को आगे जाने के लिए. So in this case, no problem because you have to remember the 4 steps as I told you, and accordingly you have to put it. So no problem if agar this type of question रहेगा. But problem is if the question has changed in a some paragraph, means some कहानी दे दी. कहानी means yeah. देखिए कहानी. The airplane can carry a maximum 200 passengers. The profit of 400 rupees made on each first class ticket, and the profit of 300 is made on economy class ticket. The airplane reserves at least 20 seats for the first class. However, at least 4 times as many passengers prefer to
travel by economy class, then by first class, determine the how many of each type of tickets must be sold in order to maximize the profit for the airlines. What is the maximum profit? हो गया ना प्रॉब्लम? अभी इतना दिन तो इतना टाइम तक तो आप लोग क्या कर रहे थे? फॉर्मूला है, पुट अप छुट्टी, कितना इजी था. Even the students are saying, sir, math will problem, लेकिन आगे क्या करोगे? अभी now this is the unique type of problem. Now coming to 2 years तक आपको सारी इस तरह का समस्या देखना. Not only here, even in the service also, this is a real problem आपको कंपनी में दे दिया जाएगा. बताओ, you are a computer analyst, data analyst, a good engineer, good operator. Now you tell me क्या करें, मैक्सिमाइज कैसे करें. आपको बॉस आपको एक असाइनमेंट दे, जो करो जो काम. आप तो नौकरी में आ गए, ज्वाइन भी हो गए, आप बता रहे प्लेन का प्रॉफिट बढ़ाओ, ये टिकट है, कैसे करोगे? सो आपको फिर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से इसको कैलकुलेट करके यू हैव टू टेल योर बॉस, you have to tell your seniors, sir, this is the maximum profit, we can increase this. So पहले इसके so whatever the data is there, you have to collect it. Data collection is very important. Now this thing has given. It is all a real data. होता है ये सिचुएशन तो होता ही. कैसे कैसे करोगे आप? सर घबराना नहीं. आई थिंक आई विल टेल यू एवरीथिंग. इसका इसमें भी टेक्निक है, और एक बार टेक्निक पकड़ में आ गया तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट देखिए, आपको इसमें सोचना है क्या लिखा हुआ. लेट द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट्स सोल्ड एक्स. जहाँ वैल्यू आपको निकालना है, और जहाँ चीज जो डेटा आपका अवेलेबल नहीं है, आप उसको मान के चलिए. एक्स वाई जेड आपको लेना पड़ेगा. सो एक्स मान and number of economical. There actually basically see the question is there are two things. One is the first class ticket and the economy class ticket. हवाई जहाज में ऐसे ही होता है, फर्स्ट क्लास टिकट होता है और ये होता है. तो अब x and y आप मान लीजिए. ठीक है, some relation has given. Based on this available data, you have to make equation. पहले तो क्या हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, बट इसमें इक्वेशन आपको बनाना है. That's all. ओके, हम स्टेट पे इसमें जा रहा हूँ कैसे बना. एज द एयरलाइन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 400 ऑन फर्स्ट क्लास एंड 300 ऑन इकोनॉमी क्लास, द प्रॉफिट ऑफ द एयरलाइंस इज 400x प्लस 300. ठीक है, दिस इक्वेशन रिटर्न में लिखिए. इसमें रिटर्न में लिखा हुआ, उसमें आपको छांट के बनाना है. दिस इज द इक्वेशन. सो दिस इज प्रॉफिट इक्वेशन इज दिस. उसमें एक्स और वाई छुपा हुआ है, because x and y वैल्यू आपको निकालना है, तो आपने नहीं दिया है. अल्टीमेटली हम अगर पुराना सबसे जाएं, सपोज सबको समझाएं, सब कहानी ना देखें. दिस इज द इक्वेशन गिवन पुराना डिस्कस किया ट्रेंड वाइज एंड सम कांस्टेंट्स आपको दे दिए, आप आराम से कर सकते हैं. तो पहले आप प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज करना है वो इक्वेशन आपने बना लिया. पहला इक्वेशन होगा जिससे p इज इक्वल टू समथिंग होता है, सेम. नाउ कांस्टेंट्स निकालना है. इसमें क्या क्या कांस्टेंट्स दिया हुआ है, व्हाट आर द कांस्टेंट्स आर देयर. कांस्टेंट्स आर गिवन as airplane can carry maximum as the airplane can carry maximum 200 passengers, we must have x plus y less than, क्योंकि when it is given a limitation 200 is the maximum, इससे ऊपर नहीं होना है. So x and y in this case 200 से लेस होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ए कांस्टेंट्स मिल गया. दिस इज अ कांस्टेंट ना, जब इस तरह का बता दिया जाता है एरोप्लेन कैन कैरी, शुड बी, इस तरह का वर्ड मतलब आपको कांस्टेंट्स है, उससे आप आधार पर आपको इक्वेशन बनाना है. कांस्टेंट्स इक्वेशंस नीचे 3-4 इक्वेशन जो बनता है, जिससे आपको प्लॉट करेंगे, जिस प्लॉट करके आपको फिजिबल एरिया निकालना है. As the airplane reserves the right at least 20 tickets for the first class. Now again another constant has given. जो first class ticket है, the 20 tickets for the
फर्स्ट क्लास टिकट्स रिजर्व रिजर्व दिस इज अनदर कॉन्स्टेंट। जहाँ पर मैं बताता हूँ टेक्निक क्या है, कैन, शुड बी, रिजर्व्स, कान डू दिस, नो, इस तरह का वर्ड होगा तो वो आपका कॉन्स्टेंस माना जाएगा। मतलब प्रॉब्लम अगर स्टेट कार्ड पता नहीं रहा तो आपको वहीं से छांट छांट के आपको कॉन्स्टेंस इक्वेशन करना है। इज अनदर कंडीशन x इज टू 20 मींस इसमें एटलीस्ट बता दो। सेकेंड अनदर कॉन्स्टेंस क्या है, और भी है बहुत सारे, तब तो एंगल बनेगा ना, मतलब लाइन बनेगा। Another is next, as the number of passengers preferring economy class is at least 4 times the number of passengers preferring in the first class. We must have to y का conditions जो बता रहे हैं. This is y means your economy class, x is first class का constants के बन गया. Now here is given this, all this line are from the question one. Okay. ये सब लाइन जो लिखा हुआ next as the number of passengers per, same thing, you don't worry, you just इससे cut and paste करो। अब सीधा देखो यहीं पर कोई ना कोई जगह में वो बात लिखा हुआ है। रिजर्व at least 20 what है 4 times, however 4 times many of the passengers prefer travel by the economy, 4 times economy class, why 4 times। सो सारी चीज आपको यहीं पर दिया हुआ है, सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक आपको उसे निकालना है और इंग्लिश को मीनिंग समझना है बस। यू हैव टू, इसका मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक इक्वेशंस। सो इक्वेशन आपको बनाने का टाइम ध्यान रखना। एनीवे आई एम नॉट गोइंग इन ऑल डिटेल्स, आप मैं जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन पकड़ना है और फ्रॉम द क्वेश्चन हाउ टू मेक इक्वेशंस टेक्निक्स। फाइनली आपको ये बन गया। Now you P's are. Now earlier though 2 questions you might have seen, this part has already given in the questions. So student no problem, straight away आप take 1 2 3 4 4 step आपने कर दिया, बस हो गया। But here it's little different question. Question के अंदर में database टाइप का क्वेश्चन दे दिया। database means basically जो एक्चुअल प्रैक्टिकली आपको करना है सर्विस में आगे चल के पास का बीसीए पास करने के बाद एमसीए पास करने, जो एक्चुअल आपको फ्रंट लाइन में है आपको काम करना है, सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा। सो ये अगर दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन द एग्जाम इन द क्वेश्चन पेपर, देन डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, स्टेट पे आप स्टेप कर लो, हो गए। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इक्वेशन बनाना है। देन आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम, सेम थिंग, पहले आप उसको प्लॉट करो, सारे प्लॉटिंग करो और मार्किंग करो। ये जो एरिया दिखे दिस ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जितने सारे लाइन्स है आपको यहीं से कट किया है और आपको मिल गया। तो ए बी सी दिस 3 पॉइंट आर आपका फिजिबल एरिया एंड दिस ए बी सी में आपको देखना है मैक्सिमाइज करना है, व्हिच पॉइंट आर मैक्सिमम वैल्यू दे रहे। नाउ पोस्ट, नाउ अनदर थिंग जो आपको कैलकुलेट करना है, दिस कैलकुलेट द वैल्यू, फिजिबल रीजन्स का वैल्यू निकालना है। सो क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट आपको मांगा है, तो सारे पॉइंट में आपको इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है इस वैल्यू आप पुटअप करके चारों को चारों पॉइंट पे देखिए, 32,000, 64,000, 62,000। सो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, दैट इज योर 64,000। So if we considering x and y value in such a way, then आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। So when 40 degrees of first class and 160 degrees, that means इसमें से once this is the your y and this is your x part. So 40 and 60 x and y निकल के आए। If we change this ticket combination, then आपको 64,000 प्रॉफिट आएगा। ये आपको आंसर में लिखना है। So this 2 line is the last 2 line is also important. Hence, profit of the airlines maximum at B point में आपको maximum point होगा। That is when 40 tickets of first class and 160 tickets of economy class are sold. जब 40 टिकट सोल्ड हो जाएंगे फर्स्ट क्लास का एंड इकोनॉमी क्लास 160 टिकट सोल्ड हो जाएंगे,
देन आप उस तरह का हवाई जहाज उड़ाने से आपको प्रॉफिट होगा। जब इतना टिकट सोल्ड हो जाएंगे आप निश्चित रहिए आपको प्रॉफिट होगा। इससे कम टिकट बिकेगा तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। उस उड़ान के दौरान उस फ्लाइट में एरोप्लेन में आपको लॉस घटा हुआ। So also maximum profit is 64%. So now what I mean to say, now you are clear cut, आपको समझ पे आ गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जिंदगी में, ये आपको अंदाजा हो गया। ठीक है, सो एनीवे एंड इट इज रियल प्रैक्टिकल थिंग्स, और बहुत आसानी से इसको आप कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। सो अनदर इस तरह का एग्जाम्पल दिए, आपको पढ़ना है सेम थिंग। फर्स्ट यू हैव टू मेक ए मैक्सिमाइज दैट फार्मूला, दैट इक्वेशन यू हैव टू प्रॉफिट बनाना है। देन कॉन्स्टेंट्स के लिए आपको अलग अलग इक्वेशन बनाना है। देन आपको पूरा क्लैम्जी फीलिंग हो रहा है आप लोगों को, हमें मालूम है। यू आर फीलिंग सर कहाँ आ गए हम लोग, ये तो क्या करें। बट अभी मैं एक इजी प्रोसेस बताऊं, देन आपको और भी अच्छे हो जाएगा। मैं बेटर फर्स्ट टाइप टू सी हाउ मेनी सिलेबस में क्या क्या दिया है। तो ये तो टाइप का हो गया, ठीक है। तो आप, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, 1 or 2 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। अंडरस्टैंड करना है आपको, बताना है जी इसमें ये सब चीज़ें हैं। लेट्स सी पेंटिंग, मल्टीपल सॉल्यूशन। हाँ, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको देना है ना। अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, ओनली 1 सॉल्यूशन गिवन, बट आपको मैनेजर इज नॉट हैप्पी, नहीं और भी कुछ बताओ। एक सॉल्यूशन है क्या हो, 2-3 सॉल्यूशन बताओ। तो आपको सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, इस तरह का सिचुएशन में आपको बताना पड़ेंगे। 2-3 चीजें आपको सॉल्यूशन देना है। डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स पर वीक बी प्रोडक्टेड, इस तरह का कंडीशन दिया है। एंड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमाइजेशंस बेटर है। लेट्स सी, it's not based on this equation. These equations you have to prepare it. ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, you have to prepare it. और लीनियर इक्वेशंस स्पेशली 10 मार्क्स होता है, जैसे 10 मार्क्स, बिकॉज काफी लेंथी प्रोसेस है। You have to first equations, preparing equations and point and graph, then profit margin निकालना है, cost निकालना है, then final conclusion देना है। So that's why it is a 10 marks. Two solution का बराबर है, but one question is रहेगा। One question definitely will get it. Let's see easy example और इस तरह का क्वेश्चन है। प्रॉफिट मार्जिन। So what I meant to say, what I am observing, so the basic thing is same. You have to objectives हुई है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। अभी तक मिनिमाइजेशन अभी देखा नहीं, वो आएगा। और देन आफ्टर दैट आपको इक्वेशंस फॉर्मेशन करना है। अगर इक्वेशन इज गिवन इन द एग्जाम, इन द क्वेश्चन पेपर, देन नो प्रॉब्लम। अदरवाइज द इक्वेशन, व्हिच इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशंस, तो वो आपको तैयारी करना है। देन यू हैव टू प्लॉट इट एंड फाइनली कॉस्ट निकालना है। देन सी this type of things are going on in the state. So better I can show you my, which I have prepared for you people. Let's go to there now. Okay, I think now syllabus almost should be having this type of things are coming. Airplane, product, company, businessman, new businessman wants plastic bucket. So yeah, this chapter there, cost estimate, cost minimizations, how to cost minimization things are coming.
I think better I can go to my material. That may be more easy. Let's see. तो इग्नू स्टडी मटेरियल से इतना आइडिया हो गया जी इसमें है क्या चीज. लेट्स सी माय okay, it is the same thing. I have prepared one the questions. It has come I think somehow it was 2016 or 2017 में क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चंस. बेस्ट गिफ्ट पैक्स एक कंपनी है ये गिफ्ट पैक बनाता है. गिफ्ट पैक manufacturers, there are two types of gift pack, type A and type B. Type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes assembly. Type B requires 8 minutes each for cutting and 8 minutes for assembly. So there are at most 200 minutes available for cutting and at most 4 hours available for assembly. Actually, this type of questions एक बार पढ़ने से नहीं होगा. डेफिनेट आपको बार बार पढ़ना है. बार बार पढ़ के आपको चुनना है क्या लिखा है इसका मतलब क्या है. सो इसी वेज जब इस टाइप का क्वेश्चन आप करने जाएंगे फर्स्ट आप देखिए क्या हुआ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉफिट. ठीक है ये वाला इक्वेशन कहाँ है ये आप पहले तलाश करें. पहला इक्वेशन जो मैक्सिमाइजेशन है उसका क्या रिलेशनशिप है वो आपको निकालना है. देन व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स गिवन टाइमिंग कटिंग 4 then the 10 value the 200 value सारे वैल्यूज जो है आपको प्रिपरेशन करना है सॉल्यूशन के लिए. So better way I can show my solution and how I have taken that I show you. Type A, there are two type of things packing company. So उसमें two type A that's X मान के चलो and type B is Y. So they have to take a X and Y. They have to take it. Now LPP, you have to prepare the LPP maximization. So P is equal to 50 and 20 which is 50 and 20 is taken from here. Last 50 and 25. Okay, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं. प्रॉफिट इज प्रॉफिट जहां पर प्रॉफिट और मैक्सिमम इसी रिलेटेड में जो सेंटेंस आएगा उसी सेंटेंस का में छुपा रहेगा आपका ये वाला इक्वेशन. आई एम टेलिंग यू द टेक्निक मीन्स लास्ट में देखिएगा आप जहां पर मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ प्रॉफिट लिखा हुआ और उसी का आजू बाजू में जो आपको जो सिचुएशन दिया हुआ टाइप ए टाइप बी. तो दैट मीन्स ये पहला इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन का प्रिपरेशन आपको यहीं से हो गया. नाउ वी हैव टेक द वैल्यूज एंड मेक ए वन सॉल्यूशन. खत्म. जो आपका अल्टीमेटली एक्स और वाई वैल्यू मिलने के बाद आप पुट अप करना है. नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट मीन्स कॉन्स्टेंट्स ये आपको ऊपर जाना पड़ेगा क्या क्या रिलेशनशिप है एक्स और वाई का रिलेटेड में. नाउ देयर आर टू थिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं सिंपली एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद. अभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे. देयर आर टू थिंग्स आर इन्वॉल्व. क्या है एक तो इसमें कटिंग और दूसरा असेंबली. देयर आर टू थिंग्स आर देयर. टाइमिंग के बारे में दिया हुआ है. जस्ट टाइमिंग इज डिस्कसिंग द टाइमिंग बट मेनली कटिंग और असेंबली का मामला है. So two constants. So that means there will be two equations. Type A requires 5 minutes. किस लिए 5 minutes चाहिए कटिंग के लिए और 10 minutes चाहिए असेंबली के. That means टाइप A उसको 5 मिनट चाहिए कटिंग पुटिंग करने के लिए. गद्दा वद्दा काटेगा कॉटन बॉक्स काटेगा या गिफ्ट पैकेट बनाने के लिए. और 10 मिनट्स चाहिए उसको असेंबली करने के. डालेगा फिर उसको सेल्टर मारेगा थोड़ा अच्छा से सजावट करेगा रैपिंग करना है. तो असेंबली करने के लिए उसको चाहिए 10 मिनट्स. सो एंड टाइप बी अनदर टाइप ऑफ गिफ्ट पैक तो भी 8 मिनट चाहिए कटिंग के लिए. क्या डिफरेंसेस है इसका 5 मिनट चाहिए इसको 8 मिनट चाहिए. तो जरूर टाइप बी पैकिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप है उसका डिजाइन कुछ अलग है. सो दैट्स उसका 3 मिनट ज्यादा लगता है. इधर 5 मिनट है
8 मिनट ठीक है, हो सकता है। एंड ऐसे 8 मिनट असेंबली, दिस मीन्स टाइप ए assembly 10 minutes, and in this case 8 minutes. Cutting in this case 5 minutes, in this case 8 minutes. So A type A and type B हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर मिल गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये कैसे इक्वेशन बनेगा? That's why you see it's handwritten cutting constants. Only cutting constants. The equation is this: 5x plus 8y. Cutting. Cut type A 5 and it is type B, that is 8, because type B we are considering 1. So this is the equation, and it should be not less than 200. 200 comes in the 200 also I have taken from the here. Somehow it is written 200. 200. So there are at most, by at least at most 200. जब इस तरह का वर्ड लिखा रहेगा मीन्स आपको एरो जो डालना है 200 से अधिक ना होना चाहिए, सॉरी एट मोस्ट 200 का आपको से और उसका इक्वल नहीं तो उसका कम होना, जिससे ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 200 होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड 240 कहाँ से मिला? दैट इज ऑल्सो गिवन 240. I have taken the value of कहाँ गया 240. There are 200 things available for cutting. Oh, हाँ मैंने खुद ही भूल गया 200 minutes or in the case of and at 4 hours available for assembly profit B for each of the type A and this is a so 4 hours means second case में assembly का time, that is assembly, it is हो गया, this 200 is for your cutting के लिए cutting, and at least 4 hours available for assembly. So 4 hours means you have to convert in into 60. So that means after that 40 minutes. So there is 200 minutes given, it is 4 hours. 4 hour into आप दोनों में आप मिनट्स में रख दीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए। सो क्वेश्चन आपको बारीक से पढ़ना है, यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट क्वेश्चंस। इस जगह में कटिंग के लिए 200 मिनट्स लिखा हुआ टोटल, मतलब टाइप ए टाइप बी मिला के, एंड इन दिस केस टाइप ए टाइप बी असेंबली के लिए रखा गया 4 आवर्स, मीन्स आवर्स में, दिस इज मिनट आवर्स में। सो यू हैव टू बोथ द थिंग्स, यू हैव टू कॉमन यूनिट्स, इसकी बोथ द यूनिट्स शुड बी सेम। इसमें 200 मिनट्स में तो ये भी मिनट में करना पड़ेगा, अगर ये आवर्स में है तो इसको इतने अदर इसको आवर्स में लेना पड़ेगा। सो बेस्ट है तो आप मिनट्स में करते, दैट्स व्हाई इट इज सो नाउ हो गया कॉन्स्टेंट। देयर आर 2 इक्वेशंस प्रिपेयर्ड, मेन इक्वेशन हो गया, देन आपको इधर ओनली 2 लाइन, ओनली 2 कॉन्स्टेंट्स, ज्यादा लाइन है ही नहीं, इसमें और कुछ कंडीशन भी नहीं दिया, इसमें और कुछ कंडीशन है ही नहीं, सिंपली 2 थिंग्स। सो आपका 2 इक्वेशन मीन्स 2 लाइन्स, सो देयर आर 2 लाइन्स अपियर्स। सो दिस लाइन अप टू एक हो गया आपका ये वाला लाइन हो गया और दूसरा लाइन। देन लाइन को बनाने के लिए इक्वेशन से देखिए, दिस इज इक्वेशन 5x plus 8y, 5x plus 8y 200. Then if we put a x is equal to 0, then so y is equal to 25. So this question x and y coordinate निकालने के लिए, when you how to prepare the coordinate, so first आप x को 0 मान के चलिए and you will get the y value, and और एक बार नेक्स्ट टाइम आप y का वैल्यू आप 0 मान के चलिए, देन x का वैल्यू आएगी, तो x एंड y, तो 25 और 40 ये आपका एक कोऑर्डिनेट मिल गया, तो 25x एंड y is 40, 25x मतलब दिस 5 10 15 20 25 में आपका एक पॉइंट बिंदी डाल दीजिए। सो दिस 25 और आपका इधर पॉइंट आउट हो गया। नाउ y is equal to सॉरी गलत बताया मैंने,
y x इज इक्वल टू 40, सॉरी x 40 है तो इसको आपको इस 40 में एक पॉइंट होगा एंड अकॉर्डिंगली 25, so y is 25 correspond to 25 में दिस लाइन. सो दिस लाइन जो मैं अभी कर्सर को दिखा रहा हूँ, दिस इज द लाइन आपका ए एक्स एंड वाई है रिप्रेजेंट हो. नाउ सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी आर गेटिंग x value is 24 and y value is 30. So x is 24. So x 24 this here and y is 30. So y is 30 another. So there are two lines. In the B point they are intersecting each other. Both the lines are intersecting at B. So आपको this is the point is this is over 8. That is 8. If you draw the line, that is 8. Or graph sheet में आप जब कर, when you are doing the graph sheet, then automatically it will come the values, no problem. And here is the 20. So this is B point. So this A point is 24 and 30, and this point is your C point is 0 and 25 and B. So this is the area is feasible regions. Actually, there's some H line is there within that. So 0, from the 0, you have to see the area. So both the lines are correct. We are not taking this area. This is not feasible area because it is a non-feasible area. So I have not taken it. So within the area that way we have to take it our feasible area. Then when you get the coordinate, then you value of your x and y values you can calculate it by simple algebra and you put in the value. Finally, you see all the point value you can get it. So finally, it is where 1250 is your profit. I think that any doubt right now? If anybody, any doubt? Anybody, any doubt? अभी तक I'm trying to tell you in details some of the things, but because it is I agree it is a lengthy process, but not very much difficult. Only practice is required. Hardly 10 to 12 minutes. 12 minutes is required. 12 minutes required to solve this because 10 mark questions. It is 12 to maximum 15 minutes you can do this. Anybody else, if any doubt, you can tell me. Then I will go some small video which I prepared myself, और एक वीडियो दिखाता हूँ. Then it will be more clear how to do it. Very carefully आप वीडियो को देखिए. Then after that हम लोग discuss करेंगे. Okay. So shall I start this video? Small video. Shall I show you? Sir. Okay. Then I think that video very carefully आप देख लीजिए. आज ही मैंने बनाया इसको so that आप लोग easy करने के लिए. कैसे बनाया? मैंने क्या हुआ पता नहीं कितना हो अच्छा हुआ नहीं हुआ. तो मैं फर्स्ट टाइम बनाया एक्चुअली. So थोड़ा मुश्किल से. So let's see. वीडियो है कि नहीं इधर? कहाँ गया मेरा वीडियो? अच्छा, वीडियो जाने से पहले वीडियो का जो क्वेश्चन है वो शायद तो मैंने देखा थोड़ा सा छुप गया था, तो मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन था. देन वीडियो स्टार्ट कर. दिस इज क्वेश्चन लाइक दिस. यस, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली. इसको मैंने वीडियो बनाया इसी का. एक टेलर ए एंड बी, एक टेलर है ए एंड बी, अर्न 150 रुपीज एंड 200 रुपीज पर डे रेस्पेक्टिवली. दोनों टेलर है ए और बी. टेलर ए एंड टेलर बी दोनों हम लोग अर्न करते हैं पर डे. ये 150 रुपये कमाते हैं और ये 200 रुपये कमाता है रेस्पेक्टिवली. ए वाला टेलर जो है कैन स्टिच 6 शर्ट्स and 4 pants, and while B tailor can stitch
10 shirts and 4 pants per day. इन लोगों को कैपेसिटी देती है. मीन्स आप समझ गए हैं. फ्रॉम हेयर यू हैव टू मेक ए constant equations. So A can teach as 6 pants, 6 short and 4. ये combination बन गया. And मतलब पैंट और शर्ट का अलग अलग इक्वेशन बनेगा दोनों. और क्या दिया है? हाँ, हाउ मेनी डेज टू ईच वर्क टीच एटलीस्ट 60 शर्ट्स. अगर 60 शर्ट बनाना है और 32 पैंट बना, दोनों को ऑर्डर दे दिया भाई, शर्ट 60 चाहिए और 32 पैंट चाहिए, भाई आप दोनों मिलकर बनाओ. उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, लेबर कॉस्ट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द लिस्ट कॉस्ट. सो लिस्ट कॉस्ट इन द सेंस ऑफ आपको हो गया मिनिमम. लिस्ट मीन्स मिनिमम. इतना टाइम, so many time I have taken all the maximum देखा. Now it is a minimum list, at least. Okay. और एग्जाम का टाइम ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट, ये भी लिख सकते हैं. anyhow 10 marks. So from here, तो ऐसे ही फर्स्ट हम लेट ए एक्स डेज बी वाई डेज मान के क्या, देन एलपीपी बनाना है. मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट 150 200 कहाँ से लिया, बिकॉज इट इज गिवन 150 एंड 200 बनाया. देन आपका मैंने सब्जेक्ट टू 2 इक्वेशन बन चुके हैं शर्ट और पैंट का. देन मैंने इक्वेशन बनाया लाइक दिस किया है. So then I plot these feasible results like this, and this is the question actually. Then I can show you video right now. So this is things. And finally, this second sheet क्या था इसको? Oh, अच्छा, by the it is the end portion, second portion. Finally, ये cost निकल रही है. So anyway, let's see the video. Start कर देते हैं. I think it is a 15 minutes video है. Particular this solution. Let's start. पता नहीं कैसे होगा, इसको जूम कैसे करें. इट इज विजिबल, दिखाई दे रहा है? पीपल आर ऑब्जर्विंग और नॉट? Yes, sir. अरे हाँ, उल्टा कैसे हो गया? अरे आओ देखिए, जो हुआ हुआ आपको को अंडरस्टैंड होना चाहिए, बस दैट्स ऑल. इसको बाद में मुझे क्या, किसी ने आता होगा तो मुझे बता देना, इसको सीधा कैसे करें बता देना बाद में. हाँ, सेटिंग में काफी टाइम लगता है. इसको आगे कर देता थोड़ा सा. चलो थोड़ा केयरफुली देखते रहिए आप लोग, फिर हम लोग चर्चा करेंगे.
सर हाँ बोलो। सर इसको रोटेट कर लो ना। हाँ वही तो, रोटेट करने के लिए कैसे सर करें? टूल्स में जाओ। टूल्स में जाओ, फिर क्या करना है? इफेक्ट एंड फिल्टर, अच्छा, उसके बाद? वीडियो इफेक्ट, ओके। ज्योमेट्री, हाँ, कहाँ ज्योमेट्री, पर? ज्योमेट्री ओके। और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके 180 डिग्री कर दो। रोटेट बाय 180 डिग्री। अच्छा, हाँ, हो गया ना? तो सेव कर क्लोज। दो, सेव कर दो। अच्छा, सेव करना है, वेरी गुड, सेव कर दिया, क्लोज। हाँ, छोटा कैसे हो गया फिर? साइज ही इतना। हाँ, अभी हो गया ना ठीक। और कौन, अनुराग? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आइडिया देगा, मेरे को पता ही नहीं था।
Anyway, I think okay. So this part is over. So I think if anybody understand or not, actually, it is exactly 15 minutes something I do. And if you have prepared these things, so I have to do like this. The graph sheet actually, you have to, graph sheet is allowed. You can take it, otherwise it will be supplied at the time of exam. Otherwise you can prepare in your own plain paper. No problem. But what are the way actually I prepared? Same thing. But if you take the scale, then exact measurement will come. And so 3-4 steps are there. First you have an idea from the questions how to take them main equations, that is profit equation, whatever it is. Then after that, what are the subject to means constants equation. There may be 2, there may be 3, plot it. Then you take it from this equation, then you have to take the points values x and y, that coordinate value you have to take it. Then you plot it. And finally, you calculate the value and cost value. That's all. So tell me if any question about this, and I mean any doubt. Anurag, tell me what you feel. सर आ गया समझ में. आता है ना, वेरी गुड. सो ओनली प्रैक्टिस करने से और स्पीड बढ़ेगा. मैं Yes. भी तो मैं तो एक्चुअली इस उम्र में उतना कुछ स्पीड नहीं, मेरा भी स्पीड काफ़ी कम हो गया क्योंकि लास्ट 2-3 साल से कोरोना के चक्कर में बिकॉज ऑफ दी वो ब्लैक बोर्ड में काम नहीं कर पाया ना, तो मैं खुद ही हैरान हुआ मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है. तो आपको प्रैक्टिस करो, मेरे तरह ऐसे ही लेट हो जाओगे तो और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना. Yes. और अच्छा है, थैंक यू वेरी मच. तुमने वो रोटेशन चेंज करा दी. Thank you. बाकी साउंड सिस्टम में थोड़ा कमी है, वो मैं ठीक करना पड़ेंगे. और प्लॉटिंग कैमरा फोकस भी मेरा ठीक नहीं हुआ, मैं खुद ही देख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करना है. एक्चुअली ये स्टडी क्लास में किसी ने बताया था जब इस तरह का प्लेन पेपर में लिखते, तो मैंने भी सोचा पहले ही करना चाहिए था, छोटे छोटे वीडियोस बना के देने से अच्छा. बट अगेन इट टेक ए टाइम बिकॉज विद इन दिस पीरियड मैंने 4-5 सोल्यूशन दिखाता हूँ. बट एक वीडियो दिखाने से अच्छा रहता है, स्टेप्स अगर मालूम हो जाता है एक्चुअली हाउ टू. और इफ एनीबॉडी, so I think that way all the syllabus is covered. This is the last unit था. मेरा इंटेंशन नहीं था जो आप लोगों से ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा है, और कुछ हद तक मैंने कोशिश किया, और इतना डिटेल्स में बाकी जाने के लिए तो उतना टाइम अलाउड नहीं है. बट मेरा कोशिश रहा जैसा आप लोग को पूरा करें. तो एनीथिंग एल्स, तो मैं स्टॉप शेयरिंग निकालता हूँ, बाहर आ जाते हैं. तो किसी को कुछ ठीक है, तो और कुछ बताओ, तो किसी में कुछ क्वेश्चन है कि इसमें कितना समझ पे आया कितना नहीं आया. बाकी कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है. अच्छा, दिस वीडियो मैंने ट्राई किया, हो नहीं पा रहे बिकॉज वो मेल में जा नहीं रहा, बिकॉज 25 MB वो गूगल में ले रहा है. उसको कैसे करें, आप लोगों को कैसे दें. आई थिंक और छोटा छोटा वीडियोस बनाने पड़ेंगे. क्या लिखा, मैंने लिखा नहीं. शांतरी रेज द हैंड, कुछ चैट बॉक्स में कुछ लिखा है किसी ने कुछ. सर आप कैसे कैमरा को सेट करके दिखाए कर दीजिए. आंसर दिखाते हैं. अच्छा, ठीक है. एक्चुअली प्रॉब्लम इज दीपांशु, प्रॉब्लम इज बिकॉज my camera first I had to take it, then WhatsApp PDF फॉर्म में whatever फॉर्म में मेरे को कंप्यूटर में डालना है,
then I have to show it like a video conference. But same thing डायरेक्टली शो नहीं हो पाता, कैमरा उतना स्ट्रांग नहीं है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राई टू शो यू, इसे कितना विजिबल है, इट इज विजिबल है नहीं, उतना दिखाई नहीं देगा. इफ आई ट्राई टू शो यू समथिंग, आई थिंक इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है. कैन यू सी दिस? नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम है. सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू से समथिंग, ये आप लोगों को विजिबल है? कैन यू सी दिस? अनुराग, इसको दिखाई दे रहा है? बहुत मुश्किल नो है सर. ना? हाँ नो सर. हाँ, नहीं आ रहा है ना ठीक से. कैमरा स्ट्रॉन्ग कैमरा होना चाहिए, देन ओनली इसको, और फिर मुश्किल है. तो एनी हाउ, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखते हूँ इम्प्रूव करेंगे. आई विल ट्राई टू सी हाउ बेस्ट आई कैन डू इट इन फ्यूचर ऑल्सो. सो हाँ, so I think so now my class is over. Okay, so I think chat box is everything. What about the things? If anybody is left out for attendance, I mean roll number and name, please write immediately, because I'm taking the copy. If anybody any doubts, you can also WhatsApp me, no problem. I'll try to answer in future also. अभी तो आप लोग क्लास चलते रहेगा, बाकी क्लासेस तो है ही ना ऑलरेडी. और एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर व्हाट्सएप पे किसी को अभी भेजा नहीं मुझे. आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी आंसर so far. 11 question I have given, but nobody has given. When people are try to do it. Okay, so I think now tell me. I think another 5 minutes we can discuss a little bit. So if any doubts, especially, you can tell me. What the way you can improve it. I actually during the class also I have to say there is no shortcut formula. The math you have to do it. There is no shortcut methods. As usual, initially you spend 1 or 2 hours for the math and make your own way. I think at least 30 to 40 solutions you have to do it. Per unit, 2 questions you have to do. Sorry, 2 solutions for every unit, 2 solutions. So 20 unit, 20 into 2, 40 solutions आपको करना ही है. If you really want to get a good marks in the mathematics. Assignment and all this part is there, as you know. 30% is for your exam and 30% what is for your assignment. And some viva is also there. So assignment is also 2 part. So but anyhow, assignment and that marks you don't worry. It's normally considerable marks. सबकी अच्छा किया जाता है. But in the term end you have to do it. Good marks. That questions nobody knows, and it's at par with other universities. Questions normally इग्नोर का बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है. सरल है. I think you can do. Only things you have to cover up all the units. और क्वेश्चन पैटर्न तो आप देख ही रहे हैं, तो चाहे हो जाएगा.
सो असाइनमेंट होपफुली सबको जमा हो गया और सेकेंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया क्या? यस सर। चालू हो गया तो वो भी आप लोग कर दीजिए जुलाई सेशन के लिए, कि कोई डिले नहीं करना चाहिए, तो वो कर दीजिए सो दैट कंटिन्यू रहेगा। सो आई थिंक बाकी सब्जेक्ट का क्लास तो आप लोगों को चल ही रहा है। आई थिंक बाकी मैडम का क्लास तो है ही, और मेरा मैथ अभी इतना ही था, 12 क्लास किया गया था, अलॉट किया गया था, तो उतना ही हुआ। और बाकी मैं तो हूँ और कोई दिक्कत नहीं। जब जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में दे सकते हैं, और जितना मैंने कराया वही प्रैक्टिस करिए सफिशिएंट। सो ओके, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, और अच्छे से पढ़ाई करिए, इतना ही कर सकते हैं। और बुक्स अगर आप जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है एक बुक का, और उसमें काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, बट यू हैव टू प्रिंट आउट जो चीज़ एक्चुअली चाहिए। सर एनसीईआरटी से हो जाएगा ना? एनटीआरसी 11-12 का भी सफिशिएंट है, और उसका डिटेल्स भी है। और एनसीईआरटी में आप एक काम करिए, एनसीईआरटी से भी आप पिक कर लीजिएगा जो आपको रिलेटेड सेक्शन का है, जैसे उसमें भी आपको मैट्रिक्स है, तो उतना डिटेल्स होते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे टाइप है, उतना डिटेल्स जरूरत नहीं है, फोकस आपको देखना है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और सिलेबस, सो दैट उसको मार्च करते हुए आप एनसीईआरटी का देखिए। एनसीईआरटी में एक यूनिट में आपको 40-50 आंसर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस, तो वो आपको देखना है कौन सा लेवल का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में करना है। मेरे कहना है टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आप मैथ में ज़्यादा फोकस देंगे तो बाकी सब्जेक्ट भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो देखना है कि बैलेंस करके चलना है। और क्योंकि आगे और भी करना है ना, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जाएगा, जो स्पेशली मैंने बताया वेक्टर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, और आपका मैट्रिक्स, ऑलमोस्ट सब सारे चैप्टर्स जो अगेन रिपीट होगा। मैट्रिक्स आपको रिपीटेशन आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा आगे चल के। लीनियर प्रोग्राम तो आपको हर कदम कदम में करना पड़ेगा। आप तो समझ ही होंगे जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी आज हम लोगों ने देखा, यही तो कंप्यूटर साइंस पे लगेगा ना। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट तो यही होगा आजकल सारी जगह में। डेटा एनालिसिस जो है तत्व क्या है, आपको उसको दे दिया जाता है, भाई इसमें से ढूंढो क्या क्या डेटा है, तलाश करो, वही काम के लिए तो पैसा दिया जा रहा है। और उसकी इक्वेशन बनाओ, उसको कंप्यूटर में डालो, प्रोग्राम करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, और अल्टीमेटली रिजल्ट। एवरीथिंग आजकल से सॉफ्टवेयर में हो रहा है। जो फटाफट हम लोग जो न्यूमेरिकल्स एलपीपी कर रहे हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर में फटाफट सब स्ट्रक्चर्ड है, डेटा डालना है, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, गुना भागा ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ मेथड पर मालूम होना चाहिए। तो जस्ट एज ए स्टूडेंट आपको सीखना है हाउ इट हैज़ कम, वो जानना चाहिए। जब आप कंपनी में काम करेंगे सॉफ्टवेयर बना हुआ, बट सॉफ्टवेयर उसी को समझ में आएगा जो इसको बेस तैयार है, ऑलरेडी वो जानता है जिसमें क्या डाल रहा हूँ, इस जगह में, इस जगह में, इस कॉलम में, इस जगह पर कौन सा वैल्यू डाल रहा है, प्रॉफिट का वैल्यू कहाँ डाल रहा है, कॉस्ट का वैल्यू कहाँ डाल रहा है, तो वो आप उसी स्लॉट पे डालना है, तब तो सॉफ्टवेयर काम करेगा ना। अगर डेटा उल्टा सीधा जगह में डाल दिए हैं, इनपुट डेटा करेक्ट नहीं है, तो आपको रिजल्ट प्रोग्रामर को गलती हो जाएगा, रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, आउटपुट सब गड़बड़ रह जाएगी, है ना। तो स्ट्रिंग जो बनेगा आगे चल के आप जो और भी पढ़ाई करेंगे, तो बेसिकली आपको डेटा का बारे में ज़्यादा, आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा स्टोरेज का सिस्टम है, कोडिफिकेशन करना है, एवरीथिंग। तो सारी चीज़ जो है, सारे जो फार्मूला है, इस सब चीज़ को सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर से आपको सब पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है। अभी तक तो आपको सब बेसिक चल रहा है सब। सो ऑल द बेस्ट। ऐसे कुछ नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है, ये दुनिया इसे वो चल रहा है, और फ्यूचर ब्राइट है। आप लोगों ने पहले भी कहा, थोड़ा सा इनिशियली आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अच्छा कामों के लिए तो मेहनत करना अच्छी बात है, ऐसी बात है। आपको तो नॉर्मल ग्रेजुएशन तो नहीं पढ़ रहे ना, बीए बीएससी बीकॉम तो नहीं है, ये तो आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो उस चीज़ आप पढ़ाई है ना।
तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन बन गया, हिस्ट्री में ऑनर्स के पास हो तो घर में बैठे रहे, बहुत कुछ नौकरी का तलाश करते हो। आपको कैसे नहीं है, आपको जो अच्छा रिजल्ट करेगा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा उसको तो नौकरी पक्का है। बस थोड़ा सा ये करना, इसलिए पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करते रहिए, सीखिए अच्छे से, तुक्का मार के हल्का हल्का ऐसे लाइफ में मत लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको काम करना है पूरे कंपनी में और अच्छा काम देना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे आप देखेंगे एवरीथिंग आर यूटिलाइज इन योर लाइफ, सब कुछ मैम ने जो पढ़ाया और मैथ का तो आप देख ही रहे, एवरीथिंग आर आपको लाइफ में प्रैक्टिकली आपको जो है इसमें कोई छुटकारा नहीं है, हर चैप्टर को आपको एकदम अच्छा से पढ़ना है। कोई भी अगर सुधार दे, हिस्ट्री तो नहीं है, पढ़ लिया रट्टा मार के, एग्जाम का टाइम एग्जाम में लिख के आया, बस पास हो गया, खत्म। उसके बाद हिस्ट्री याद रहे ना रहे क्या कौन जानता है, बट आपको तो ऐसा नहीं है, आपको तो सारी चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ऑफिस में बैठ के काम करना है, एनालिसिस करना है, डेटा बनाना है, एवरी डे आपको काम रहेगा, जो भी आप नॉलेज अभी गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो अच्छा से पढ़िए और अच्छे से आइए, मेरा क्लास में कहीं कुछ कमियाँ रह गया तो बता दीजिएगा व्हाट्सएप में, कोशिश करेंगे और आगे चल के और इम्प्रूव करेंगे। और आप लोगों को भी कुछ चाहिए और डेटा अगर आप कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं उसको कर दूँगा, जो अभी मैं नहीं कर पाए इस दौरान तो मैं आपको बट आपको बता दीजिए क्या क्या चाहिए, उसमें कोशिश करें। हाँ बताओ सर, आपके हिसाब से अगर रिवाइज करेंगे तो कितने दिन में हो जाना चाहिए मैथ्स? रिवाइज पहले तो फर्स्ट थिंग्स आपको एक बार तो पूरे यूनिट्स को एक बार पढ़ना चाहिए, ऑल यूनिट्स जो है आपको अच्छे से एक बार यूनिट को पढ़ लीजिए, जो मैंने टेक्निक बताया, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक तो एक दो सोल्यूशन करिए, देन उसका एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना, एक बार सिर्फ नोट करके तो रखना नहीं है ना, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो देन ओनली बिफोर एग्जाम आपको अच्छे से बन जाएगा। आपको टारगेट रखना है 80 to 90% कवर हो जाए, देन डेफिनेटली आपको हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट मार्क्स को आपको बूस्ट अप करेगा, असाइनमेंट मार्क्स भी है तो आपको अच्छा मिलेगा। तो थ्योरी में आपको थोड़ा सा 70 में आपको एटलीस्ट 50-60 मिल गया और असाइनमेंट मार्क्स जोड़ गया तो 80% 80 to 90% सबको हो जाएगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि मैथ में आपको अच्छा मार्क्स होना चाहिए। गेट कट भी देखने में भी अच्छा लगेगा, अगर BCS स्टूडेंट मैथ में 40-50 मिला है तो अच्छा नहीं लगता गेट कट, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसी मार्क्स को में इंटेलिजेंस ही पता चलेगा जी, यस ही इज कैपेबल, फाइनल ईयर तक आराम से पहुंच पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, अगर BCA में अच्छे से टिके रहना है, टीचर में MCA भी करना है, तो ये तो बेस है ना, ये फाउंडेशन है। ठीक है, तो आई थिंक वो तो डिपेंड करेगा किसका कितना रिविजन करना है, किसी को हो सकता है रिविजन का आवश्यक ही नहीं है, मैंने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट को जानता हूँ जो क्लास में जो सिखाया जानता है वही एग्जाम में जाके करता है, टाइम ही नहीं मिला हुआ जो भी, तो हो गया। तो डिपेंड करेगा आप कितना रिटेन कर रहे हो, रिटेनिंग पावर बढ़ाने पड़ेगा, बीच बीच में चर्चा करिए दिमाग में, आप सोचते रहिए ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये LPP लीनियर प्रोग्रामिंग करने के टाइम जो 4 स्टेप है उसको याद करते रहिए, कैसे हुआ नहीं हुआ, पहले कौन सा इक्वेशन आ गया, फिर इक्वेशन से कैसे प्लॉट करना है, तो इस तरह का आप सोचते बैठे बैठे सोचते रहो, चाय पीते पीते सोचते रहो, उसमें ही डूब जाओ, वही रिविजन है। ऐसे नहीं है बुक्स लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, वो नहीं है, आप चलते फिरते याद करो जो तुम्हें याद आता है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको जाके बुक्स और नोट लिखना पड़ेगा घर में। अगर चलते फिरते कभी भी आपको मान लीजिए मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो में चलते चलते बैठ के आप सोच रहे देखते वो वाला फॉर्म याद, अगर आप खुद याद करो जो आ रहा है तो आप अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो घर में आके तुरंत वो कॉपी देख लो एक बार, फिर याद आ जाए। रिविजन का मतलब यही होता है, तो अलग से कोई ये नहीं लेके बैठना है एग्जाम का टाइम 2 बार 3 बार करना है, तो मैथ को रट्टा मारना नहीं है ना, आपको याद करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, जिस टाइम आपको याद आए कर लो। अगर हर 2-4 ब्लॉक वाइज सबको कंप्लीट करना, पर्टिकुलर एक ब्लॉक 4 यूनिट करके है, तो फर्स्ट 2 ब्लॉक
वो जल्दी से खत्म कर। थर्ड फोर्थ तो है तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहला ब्लॉक में ही आप फंसे हुए हैं, ब्लॉक पहला ब्लॉक ही खत्म नहीं हो रहा तो कैसे होगा, है ना? ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत को बोलिए। और जितना मेहनत करोगे, जितना मीठा डालोगे, गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा। सो ठीक है, आई थिंक नाउ रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर देता हूँ ऑलमोस्ट। ओके, so that I can stop the recording.